Good morning, kids. Welcome back to your online learning. So we are reading this story today, and we are in third part of the story, The Boy Who Asked Why. Okay, let's move ahead with the objective. We will be able to make connections and draw deeper meanings out of the story. हम कहानी की गहराई में जाके कहानी को समझेंगे. Okay. Okay, Bacha, till now what we read is Bhim was a little boy who belonged to a caste of untouchables and he really wanted to go to schools, but the parents were scared of sending him to school क्योंकि उन्हें पता था कि भीम को स्कूल में कैसे ट्रीट किया जाएगा. Okay, so now let's move ahead. At the age of 5, Bhim went to school just like his brothers and sisters before him. And like them, he could not sit with the rest of his class. He had to sit in a corner with a few others like him, the untouchables. Bhim knew the rule already. He had to sit on a gunny sack that he brought from his home. He could not touch anything in the school. So basically this is how Bhim was being treated in school. आपको ऐसे पीछे बच्चे दिख रहे हैं तीन. As you can see, those kids are not sitting on the chairs or tables like all of us do in the school. वो बच्चे घर से अपना अलग से एक बैग लाते थे, एक बोरिया लाते थे और वो लोग उसमें बैठते थे. They were not allowed to touch anything. And उनके लिए अलग से रूल्स थे और वो साइड में ही बैठते थे. Okay, they were not allowed to sit with the rest of the class. सोचिए अगर आपके सब फ्रेंड्स आगे बैठे हैं और आपको बोल दिया जाए कि आप पीछे अलग से बैठेंगे, चेयर्स टेबल में नहीं बैठ सकते, आप कुछ टच नहीं कर सकते. Just think how you would feel. And Bhim would also feel the same thing. The teachers wouldn't touch his slate. अभी सब बच्चे काम सबमिट करते थे पर भीम और जो बाकी बच्चे थे जिनको सब अनटचेबल्स कहते थे, teachers didn't even used to touch their slate. तो पहले से बच्चा there didn't used to be notebooks like these times. Okay, पहले से slate होता था. Slate is like a small blackboard जिसपे आप चौक से लिखते हैं और फिर मिटा देते हैं. Okay. If he wanted water, the school peon would pour it down into his hands so that even the water pot did not touch him. If the peon didn't come to school and he and the other untouchable children like him would have no water to drink the whole day. But none of this stopped Bhim from going to school. So basically all these are the discrimination that used to happen to the untouchable children who used to attend school. आप पिक्चर में देख रहे हैं ना कैसे उनको पानी दिया जाता था. Why? क्योंकि ताकि वो बर्तन भी वो लोग टच ना कर पाए. This is how other people used to make them feel. जो पियोन भैया होते थे वो उनको पानी देते थे और कभी अगर पियोन भैया एब्सेंट है तो उनको पानी ही नहीं मिलता था दिन भर, नो मैटर हाउ थर्स्टी दे वर. Okay, this is how they used to treat the kids. But the good part, the silver lining is nothing stopped Bhim from going to school. No matter how bad you treat him, no matter what you make him feel, पर वो school जाते रहे. Okay, some questions. You have to make a list of all the things that Bhim faced when he was sent to school. I already told you, you go back and read once yourself and make a list of all the things that Bhim faced. जो भीम ने देखा स्कूल में जो उसके साथ किया जाता था, make list of those things. Okay. Did it stop Bhim from going to school? उन भीम के साथ जो ये सब बुरा हो रहा था, did it stop Bhim from going to school? What does it tell you about Bhim? And if it stopped or not stopped, what is it telling you about Bhim? वो कैसे इंसान थे, आपको क्या लगता है? Okay, pause the video and write the answers. Okay, bacha, now these are few of the facts that I gathered for all of you. Other caste didn't even let the shadow of Dalits touch them. So when we talk about untouchability as an issue, the people who were considered untouchable, other people उनको तो नहीं छूते थे, उनकी परछाई को भी खुद में नहीं छूने देते थे. This is how they used to treat other people. Dalits were asked to beat a drum before they enter an area so that other people can be aware of their arrival and maintain distance. So basically the people who were called untouchable, they had different area to live. और अगर कभी उनको किसी और के एरिया में किसी काम के लिए आना पड़ता था तो बच्चा उनको ना ड्रम जैसा बजाना पड़ता था ताकि दूसरे लोग आवाज सुन के सावधान हो जाएं और दूरी बना लें, ताकि गलती से भी कोई किसी अनटचेबल जिन्हें बोला जाता था उनको छू ना ले.
They were not even allowed to pray in the same temple where other people prayed. So बच्चा भगवान तो सबके सेम होते हैं ना. God made all of us. So there is God is like in eyes of God everybody is equal, right? जो भी डिविजन्स किए, कास्ट सिस्टम हुआ, अनटचेबिलिटी, ये सब इंसान ने किए, किसी भगवान ने नहीं किए. तो भगवान के आगे सब बराबर है. पर लोगों ने क्या कर दिया? उन लोगों से बोल दिया कि तुम हमारे मंदिर में भी प्रार्थना नहीं कर सकते. Okay, this is how those people were treated. And to be very honest, untouchability still exists in India. So still in many parts of India, people are treated in this way only. Okay, now time to think. What does these facts make you feel? आपको कैसा लग रहा है ये facts पढ़ के? How would you behave with Bhim if you were his classmate? Now imagine Bhim was a boy in your class and you belong to upper caste बोला जाता है जिन्हें, and when everybody is treating Bhim as an untouchable और ये सब हो रहा है, if you were his classmate, how would you behave with Bhim? Okay, बच्चा, I want all of you to be honest, okay? Just don't write कि ये शायद सही आंसर होगा तो मैं ये लिख देता हूँ. Whenever the questions are like time to think, there are no right or wrong answers, okay? ये आपके आंसर्स हैं, जो आपको लगता है वही सही है आंसर, okay? Okay. There was one teacher, Mahadev Ambedkar, who was very fond of Bhim. He belonged to a high caste at the top of the ladder. So there was this one teacher called Mahadev who belonged to high class. जैसे भीम ने बोला था ना कि ये दुनिया एक सीढ़ी की तरह है, उसमें कुछ लोग सबसे ऊपर और कुछ लोग सबसे नीचे. अनटचेबल्स को भीम को लगता था सबसे नीचे. तो जो महादेव सर थे वो उस सीढ़ी में सबसे ऊपर थे, हाई कास्ट को बिलोंग करते थे, एट द टॉप ऑफ द लैडर, सीढ़ी के सबसे ऊपर. ही वॉज फॉन्ड ऑफ भीम, मतलब उनको भीम बहुत पसंद था. He shared his lunch with Bhim sometimes. He even changed Bhim's surname to his own in the school records. So from then on, Bhim Rao Ambavadekar became Bhim Rao Ambedkar. And unlike other teachers, Mahadev sir used to share his lunch with Bhim, and he changed Bhim's name, okay? And then Bhim became Bhim Rao Ambedkar. Bhim को उन्होंने अपना surname दे दिया. Okay, but pause the video and read it yourself. Okay, some questions. How was Mahadev Ambedkar different from other teachers? What does it tell you about him? So Mahadev Ambedkar, do you think he was different from other teachers? And what does it tell you about him? What kind of a person do you think he is? Okay. Why do you think he gave his surname to Bhim? So बच्चा we read कि उन्होंने भीम को अपना सरनेम दे दिया, ओके? जब भीमराव अम्बेडकर से वो भीमराव अम्बेडकर बन गए, ओके? सो नाउ आपको सोचना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा. सरनेम तो भीम के पास था, फिर उन्होंने अपना सरनेम उसको क्यों दे दिया, ओके? लास्ट क्वेश्चन इज, डिड यू एवर हैव अ टीचर लाइक अम्बेडकर? हु? सो जैसे अम्बेडकर सर थे, who was fond of भीम, जो भीम के साथ लंच भी करते थे, उसका ख्याल रखते थे, तो क्या आपके पास कभी ऐसा कोई टीचर रहा है? If yes, who? If not, do you wish to have a teacher like अम्बेडकर? Why? अगर आपके पास ऐसा टीचर नहीं रहा है, क्या आप चाहते हैं आपके पास अम्बेडकर जैसा टीचर हो? Why? क्यों? Okay. Okay बच्चा, so for today we have a survey to do. सर्वे मतलब क्या होता है बच्चा? जहाँ पे हम कुछ लोगों से कुछ सवाल करते हैं और फिर हम ऐसे उनका आंसर्स कलेक्ट करके उसका देखते हैं कि सबने क्या आंसर किया है, फिर उससे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ओके? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सर्वे. सो वी आर डूइंग अ सर्वे टुडे. योर जॉब इज यू हैव टू पिक 2 people फ्रॉम योर फैमिली और योर नेबरहुड. आसपास से एक अपने फैमिली से ढूंढ लीजिए, एक अपने पड़ोसियों से बात कर लीजिए, ठीक है? एज ऑफ द पीपल शुड बी अबव 15 years. सो डोंट पिक चिल्ड्रन, ठीक है? 5-6 साल के बच्चे नहीं, 15 साल से बड़े लोगों को आपको बात करनी है. एंड यू हैव टू आस्क फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉर देम, ओके? टेक अ नोटबुक, उसमें 2 पेज में लिख लीजिए, एक जगह पहले इंसान का सर्वे, एक जगह दूसरे इंसान का, ओके? फर्स्ट थिंग यू विल आस्क देम इज देयर नेम. Which village are they from? वो कौन से गांव से हैं? Have you or your family ever faced any kind of discrimination? What is it? क्या आपने और आपके परिवार ने कभी भेदभाव फेस किया है? अगर हाँ तो वो क्या है? ओके, जैसे डिस्क्रिमिनेशन भीम के साथ हो रहा था,
वैसा ही या उससे अलग डिस्क्रिमिनेशन भी क्या उनकी और उनकी फैमिली ने फेस किया है, वो क्या था? हैव यू एवर सीन एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हैपनिंग अराउंड? व्हाट इज इट? क्या आपने अपने आसपास डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देखा है? वो क्या था? ओके बच्चा, अभी यू कैन ट्रांसलेट द क्वेश्चंस to your like to the people in any language they are comfortable. अगर आपकी विलेज की लैंग्वेज में उनको समझ आता है, या हिंदी में समझ आता है, या इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज में आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं. ओके, एंड इन विच एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट टू राइट देयर आंसर्स यू कैन राइट देम. ओके, और अगर आपको कुछ भी डाउट है सर्वे के क्वेश्चंस में, यू कैन आस्क इट टू मी ऑन व्हाट्सएप and make sure you do this survey. Okay, this survey is really important. Okay bacha, I will wait for all the answers on WhatsApp. Do well, study well. Happy learning everybody. I will see you in the next class.